Hello student, today we are going to discuss about the components of food. Whenever we talk about the components of food, the main components are all the nutrients, roughage and water. Nutrients are carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. All are the examples of nutrients. So today we are going to perform the test related to starch, fats, proteins. Now, starch is the example of carbohydrate. As we know that carbohydrate is the main component of the food and it is also called as energy giving food, and carbohydrates may be present into two forms, simpler forms and complex forms. Simpler form which is called as sugar and complex form which is called as starch. ओके स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो टू फॉर्म्स में रहता है, सिंपलर फॉर्म एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अब हमें अपना टेस्ट स्टार्ट करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एनर्जी गिविंग फूड होता है, एनर्जी देता है हमें। अब हम टेस्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं, हम उसमें देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं हमारे जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, कैसे हमें कंफर्म होगा। तो उसके लिए हम एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट टेस्ट है हमारा टेस्ट फूड फॉर स्टार्च। बिफोर वी स्टार्ट our experiment to the test the presence of starch in food, let's us first understand what is starch. Starch is a complex carbohydrate present in our food we eat. Starch is odorless, tasteless, white in color. What are the major sources of starch? कौन कौन से सोर्स होते हैं हमारे स्टार्च के? Let's see. Rice, corn, wheat, potatoes. These all are the sources of starch. Let's us start our experiment to the test the presence of starch in our food. Take a small quantity of rice in a petri dish. Make a fine paste of the rice using water. वाटर की हेल्प से हम फाइन पेस्ट बना लेंगे. Put the paste in a test tube. जो पेस्ट हमने तैयार किया है उसे टेस्ट ट्यूब में डालेंगे. Add few drops of iodine solution with the help of dropper. ड्रॉपर की हेल्प से हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में आयोडीन सॉल्यूशन पुट करेंगे. What do you observe? आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या देखेंगे? The sample turns blue black which confirm the presence of starch in the rice. जो हमारा सॉल्यूशन है वो कैसा हो गया है, ब्लू कलर का. जब हमारा सॉल्यूशन ब्लू और ब्लैक कलर का होता है तो वो क्या शो करता है कि इसमें स्टार्च प्रेजेंस है. Whenever starch react iodine solution, it turns blue black. नेक्स्ट है हमारा टेस्ट फूड फॉर प्रोटीन. प्रोटीन के लिए आप कैसे टेस्ट करेंगे? Before we start our experiment to test food for protein, let's us first understand what is protein. एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें प्रोटीन के बारे में पता होना चाहिए. प्रोटीन आर large molecules consisting of amino acids which our bodies and the cells in our bodies need to function properly. Our body structures, functions, the regulations of the body cells, tissues and organs cannot exist without proteins. The muscles, skin, the bones and many other parts in the human body contain significant amount of protein. In fact, protein accounts for 20% of the total body weight. What are the major source of protein? अब proteins के कौन कौन से major source होते हैं? Let's see. Soyabeans, cereals, beans, groundnuts, these all are the animal sources of protein. Eggs, fish, meat, milk, these all are the animal sources of protein. Let's us start our experiment to the test of presence of protein. Take a small quantity of mashed beans in a petri dish.
Put it in a test tube and add some water. Add a few drops of copper sulfate solution to it with the help of dropper. क्या डाला हमने? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. किसकी हेल्प से? ड्रॉपर की हेल्प से. Then add few drops of sodium hydroxide solution. What do you observe? क्या observe करेंगे आप? The sample turns purple, which confirm the presence of proteins in the food sample. Note: whenever protein reacts with copper sulfate and sodium hydroxide solution, it turns purple. Test food for fat. Before we start our experiment to test food for fat, let us first understand what is fat. Fat is a nutrient essential for normal function of the body, and living is not possible without it. Not only does fat supply us with energy, it also makes it possible for other nutrients to do their jobs. What are the major sources of fat? फैट के मेजर सोर्सेज कौन कौन से हैं? मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ड्राई फ्रूट्स, दीज ऑल आर द प्लांट सोर्सेज ऑफ फैट. बटर, घी, चीज, all are the animal sources of fat. Let us start our experiment to test the presence of fat in our food. Take a small quantity of dry fruits like cashew nuts, almonds in a petri dish. Petri dish में क्या लिया हमने? Cashew nuts और dry fruits ले लिए कुछ. Rub it on a clean paper, clean white paper. You will observe oily patches on the paper. जो पेपर है उस पर ऑयली पैचेज दिखाई देंगे आपको. Hold the paper against the light to see the oily and translucent patch clearly. The fat present in the food sample is what makes the paper oily and translucent. Test food for sugar. अब हम शुगर का टेस्ट करेंगे. Before we start our experiment to the test food for sugar, let us first understand what is sugar. Sugar is the generalized name for sweet carbohydrate which are soluble in water. They are composed of carbon, hydrogen, and oxygen. What are the major sources of sugar? Fruits, milk, honey, jaggery. These all are the major sources of sugar. Let us start our experiment to the test presence of sugar in our food. Take a small quantity of glucose in a test tube. Test tube में small quantity में हम glucose लेंगे. Add few drops of Benedict solution. और इसमें Benedict solution की कुछ drops डालेंगे. Heat the test tube in water bath. What do you observe? क्या observe करेंगे आप? The sample turns orange, which confirm the presence of sugar in the food sample. Note: whenever sugar reacts with Benedict solution, it turns orange. जब sugar react करेगी Benedict solution के साथ तो ये कैसा हो जाएगा? Orange color. तो इन सभी टेस्ट के माध्यम से हमने आपको बताया कि हमने कौन कौन से टेस्ट किए हैं. प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इनके सभी टेस्टों के माध्यम से हमें पता चला कि जो भी फूड मटेरियल है इनमें क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.